So the first thing when you are comparing the search strategies is the complexity, the time and the space complexity, and that is generally in terms of the BIGO that you define. Then completeness. That means that a search strategy will always take you to your goal. If any search strategy is incomplete, that means that it will not take you to your goal always and under all scenarios. Optimality. That means that whenever you have a search strategy applied, it would always give you the best solution. And that means the low cost solution, the lowest cost solution in terms of uh, the, primarily the cost associated with it. Then you have another factor which is called admissibility. The admissibility factor is that uh, whenever you compare a cost, whenever you compare the cost of search with the okay, okay, whenever you compare the cost with the solution cost associated with that particular search. Um, the search, the estimates that you have, those estimates would always underestimate the the actual cost, and we'll discuss this later on with some example, and probably you'll understand it that how the admissibility factor actually helps. So we'll talk about it later. Then you have the irrevocability, and that means that the search may or may not have the backtracking allowed. Therefore, if you are on a particular path, you actually completely evaluate that path before you actually change the direction. So these are the different factors that you use in order to compare the search strategies. So using these search strategies, uh, the important thing that we'll be discussing is associated with the cost. And I'll come to the cost factor later on. I'll discuss this formula again today with the help of a few examples. But just to uh, recap of that, what the blind search strategies would look like. Here, in case of the breadth first search, you evaluate uh, at, at, at all the nodes at a given level before moving on to the next level. Okay, so you move from A to this level, and then you evaluate B and C, and then you move to the next level, and then evaluate D, E, F, and G, and then you move to the next level. This is what BFS would look like. So before you move to any lower level or any higher level, you have already evaluated all the nodes at that particular level. Okay, so if you compare it with the other search strategies, you'll find that this search strategy is primarily a complete search strategy. In case of DFS, which is depth first search, you select a path, and then you go all the way down that path. Okay, before you actually change direction. So here you change the direction, and this way you actually uh, evaluate these nodes. Okay, so from A you move to B, and then to D, and then to H, and then to I, and this is how you actually evaluate, and you keep on evaluating these nodes in this particular fashion. Okay, and so you can see that if you enter a particular path, and if that path is infinite, then you might end up say moving along that path without any change in direction, and therefore you might not be able to reach your goal. So in this term, DFS may be an incomplete search.
depth first search. Then you can actually combine these two. Okay, the uniform cost search. The example that I gave you last time on uniform cost search was that from A you choose a path that has a lower path cost, and path cost. Let's say the cost of moving from A to B is 5, and the cost of moving from A to C is 10. So so the choice would be evaluating B uh, after A. And then if you are at B, then you will not evaluate D. In fact, you will evaluate E in this case because the path from B to E is, is small. I mean, the cost is smaller. Therefore, you will always choose a node to evaluate which has a lower path cost. So here 5, 2, 3 and 10 are the path costs associated. Okay. Then you have iterative deepening. Iterative deepening is that you fix a particular level. So you let's say if you fix your level at L is equal to 0, so you will evaluate the root node only, and you'll primarily stop at that point. If you fix L, which is depth equal to 1, then you will evaluate all the nodes at level 1. And then you might end your search if you have limited your depth to 1. So you can limit your depth to, let's say, some level. And then you evaluate all the nodes up to that level. So this is primarily avoiding infinite entry into infinite loops because and would restrict the depth of search, and as a result would combine the what you say as the benefits of depth first search and breadth first search. So it's primarily a breadth first search limited to uh, at a limited depth. Now, why breadth first search? Because because in the property of breadth first search is that it actually evaluates all the nodes at a given level. So here also, you fix your levels before you actually do your search, and then you evaluate all the nodes. And if it is required, you can increase the value of L. The value of L here is primarily the depth associated with your search. Okay, so if your depth is let's say 2, then finally all the nodes that are present at up to level 2 are evaluated. Okay, and you may increase this level, this value of L. So L is equal to 3 के ऊपर आप जो है वो तमाम nodes को evaluate करेंगे which are associated with up to level 3. So primarily a depth first search applied to at a limited depth. So you change your direction quickly rather than the other way. Okay, so let me just see. There are some questions associated. Okay. जी DFS के अंदर yes backtracking is allowed, so you do the backtracking because आपने paths and in all these search उस वक्त तक आपने backtracking allow करेंगे तो तभी आप अपनी direction change कर सकते हैं, otherwise it won't be possible. Okay, the difference is in case of iterative deepening and breadth first search is the search that you perform deepening is depth wise search. So the search strategy जो है वो ये है कि आप iterative deepening के अंदर you actually evaluate all the nodes uh, at a given level. So there the similarity between breadth first search and iterative deepening comes in.
लेकिन जो सर्च स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट करते हैं दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, तो आप डेप्थ फर्स्ट ही अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ आइटरेटिव डीपनिंग। और आइटरेटिव डीपनिंग का डिफरेंस फ्रॉम डेप्थ लिमिटेड सर्च इज कि डेप्थ लिमिटेड सर्च में यू ओनली लिमिट योर डेप्थ and then you move along a particular depth. लेकिन आइटरेटिव के अंदर you might iteratively increase or decrease the level. I mean you might iteratively increase the level, ठीक है, तो उसमें iterative behavior है. That means that you can start with a particular level and you can limit your depth up to a certain level, but then if required you may increase or decrease that level. There are states that are generated multiple times. Won't that be space intensive in iterative deepening? Right. So you always keep track of the previous level. So you don't really generate those states repeatedly. ठीक है. तो अगर फर्ज करें L2 आपने फिक्स किया हुआ, so level 2 तक आपने तमाम nodes को evaluate कर लिया, and then if you increase it to level 3, and then you'll only evaluate the additional nodes, not those nodes that have already been evaluated. ठीक है, तो इस तरह से आपको multiple times उसको evaluate करने की ज़रूरत नहीं है. The slide actually shows L3 strategy when you actually start from scratch for L is equal to 3. लेकिन प्रैक्टिकली यू विल नॉट बी डूइंग दिस. प्रैक्टिकली आप अगर एक लेवल इंक्रीज करते हैं तो you will have all the nodes evaluated at the previous level. So you will not be evaluating those nodes at the previous level again. Acha, okay, so let's come to this problem now of this solving the maze. Here you can see कि अगर मैं इसको सबसे पहले I'll have to convert it into some form of a graph or tree representation. So this would be the graph or the tree representation, and once I have this representation, then I can search for my goal. And here the goal is, let's say, reaching the node M. So अगर मैंने इसको depth wise करना है, breadth wise करना है, तो this is how I'll actually be evaluating the nodes. Okay, this is breadth first search, and I'll reach my goal after doing this type of search. If I'll be using a depth first search, then the evaluation would be in this particular fashion. So you will actually be reach all the nodes, and then basically you will move or change direction. And let's say in this fashion, right? And you'll ultimately reach your goal. This is how you will actually reach your goal. Acha. And here in both these strategies, what you'll actually be assuming that the cost of moving from one node to another node is fixed. Okay, so we'll in case of breadth first search or depth first search, we'll say that A से B पे move करने की cost 1 है, B से E से move करने की cost 1 है. So it's basically B से F move करने की cost 1 है. So all these costs are primarily 1. So, all these costs are 1. So let's say you are at let's say J. So this is your present node. Then the path cost associated with J would be its cost when you actually connect it to your start node. So start node से J तक आने की जो cost है, that is this is the path that you actually traverse in order to reach J. Therefore, this cost would be equal to 3. Okay, so this is the path cost. So A से D तक cost 1 है, D से I तक cost 1 है, and I से J तक cost जो है, that is 1. So if you add all these together,
the path cost associated with J is 3. The path cost associated with E is 2. The path cost associated with C is 1. And the path cost, let's say, associated with L would be, that would be 4. Okay. So this is the path cost associated with L. So this is the path that you will probably take to reach L, and the path cost associated with L is 4. Okay, so ये तो आपके पास cost factor आ गया, which is the path cost associated with that. अच्छा, last time we discussed कि इसमें आपने heuristic cost अगर आप इसमें add कर देते, that would convert this search strategy into an intelligent search strategy. अगर आप choice of the node जो है, that is based upon the total cost, which is F, and that total cost, which is F, is an addition of the G cost and the H cost. And G cost is the path cost, and H cost is the heuristic cost. Heuristic cost क्या है? Heuristic cost is primarily an estimate of the future traversal from your present state to your goal state. और ये आप evaluate करते हैं based on some heuristic. So let's just see कि इस केस के अंदर heuristic क्या हो सकता है. Okay, let's see. एज का एक दफा फिर बता सकते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ. So let's see कि आप you start at your start node, which is A. ठीक है. So A से इसका जो next consecutive cost है, A से इसकी next consecutive node तक की जो cost है, let's say A से D तक आने की blind search strategies की मैं बात कर रहा हूँ. A से D तक आने की cost जो है, let's in case of DFS it would be let's say 1. ठीक है. लेकिन A की heuristic cost क्या होगी? A की heuristic cost ये होगी कि it's estimated distance from its goal node. और ये आप कैलकुलेट करेंगे बेस्ड अपॉन सम heuristic. So इस केस में heuristic आप ले सकते हैं straight line distance. So straight line distance on a map between your present node and your goal node can be considered as the heuristic cost. So फर्ज करें आपका goal node जो है वो m है इस केस में. So that's your goal. So that's my goal. I want to reach this, and I have this map with me. So I can estimate the heuristic cost of each node with respect to the goal node. So A से M तक का जो straight line distance. So obviously this would be less than the actual distance between A and M. But I can use this straight line distance on a map to estimate that how far A is from the goal. So A से M तक का जो straight line distance है, that distance could be considered as, or in other terms, displacement between A and M could be considered as the heuristic cost. So similarly, अगर ये maze मुझे दिया हुआ है, तो मैंने B की heuristic cost निकालनी. So B की heuristic cost जो होगी, that would be again the displacement or the straight line distance between B and M. इसी तरह से हर नोड की मैं ह्यूरिस्टिक कॉस्ट निकाल सकता हूँ. C से M तक की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट निकाली जा सकती है. L से M तक की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट निकाली जा सकती है. इस D से M तक की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट, N से M, and similarly K से M and J से M और H से M. Similarly, all these nodes in distance from your goal, right? So this would be considered as the H cost. Okay, so this straight line distance would be considered as the H cost. और इसके अंदर अगर मैं path cost add कर दूं, that would give me my total cost. So let's say A से M तक का straight line distance मेरे पास जो है वो, and here
if I have the graph with me, the tree representation with me or the graph representation, तो यहाँ पे I can say कि A is my start node, right? तो A से B तक का जो path cost है वो 1 है, ठीक है? अगर मैं A से B मूव करता हूँ तो path cost 1 है। A की heuristic cost क्या होगी? A की heuristic cost straight line distance from M हो, ठीक है? तो because my heuristic is a straight line distance, तो A से M तक जो heuristic cost है, I can add that heuristic cost at node A, so that would be, let's assume कि वो straight line distance 10 है, ठीक है? 10 units आते हैं, तो A की जो heuristic evaluation है वो 10 है, ठीक है? और B की जो heuristic evaluation होगी वो B से M तक का straight line distance है, and that could be, let's assume that would be 12, ठीक है? और A से C की जो path cost है वो 1 है, लेकिन C की जो heuristic cost होगी that would always be with respect to the goal. So C से M तक का जो straight line distance है that would be, let's say 9, ठीक है? So you can see कि B की heuristic cost ज़्यादा है और C की heuristic cost कम आ रही है, and ideally this should happen क्योंकि C is more closer to M compared to B, ठीक है? तो B on the map, if you look at on the maze, you will find that point C is more closer to M, therefore उसकी heuristic cost जो है वो कम होनी चाहिए, और heuristic cost वैसे भी कम है क्योंकि if you look at the map तो C का distance from straight line distance from M is lower compared to B. So let's say कि जैसे जैसे, so यहाँ पे अगर मैं ये heuristic assume करता हूँ तो in that case D का heuristic cost जो होगी that would again be lower compared to both B, C and D. So let's assume कि इसकी heuristic cost 8 है. It has to be lower क्योंकि आप if you look at the maze you will find that D is more closer to M, तो उसकी heuristic cost कम होनी चाहिए. अच्छा, so now let's say कि मैं total F cost निकालता हूँ, तो F cost of node B. So let's say कि F cost of node B क्या होगी? So anyone? F cost of node B, 13, exactly. So this would be the path cost, which is from A to B, plus the heuristic cost. So that would be 12 plus 13. Okay. So that would be 12 plus 13, sorry, 12 plus 1, which is 13. So in this case, FB जो है वो 13 है, और FC जो होगा, that would be 10. So F of C would be 10. Okay. So F of C मेरे पास जो आता है, that would be equal to 10. And that would be 10, and F of D here would be 9, ठीक है? तो अब मेरे पास तमाम नोड्स की F cost आ गई, that means कि that F cost would be the heuristic cost plus the path cost. तो let's assume कि आपके पास ये इसकी F cost 9 है. सिमिलरली हर नोड की F cost आपके पास आएगी, तो E की F cost आपके पास आएगी. इसी तरह से E की F cost would be, let's assume कि it's sorry, the heuristic cost of E can be taken as 1. These are just fictitious numbers. I mean, practically what you'll do is you'll actually apply the heuristic and find out the heuristic cost. Heuristic apply करेंगे और वहाँ से heuristic cost निकालेंगे. So E की जो total cost आपके पास आएगी F cost, that would be 2, ठीक है? 1 plus 1 2 plus 10, which is 12. Okay, so इस नोड की जो टोटल कॉस्ट आपके पास आएगी F cost, that would be 12, ठीक है? So now you can see कि आप जो and the rule would be that you'll always choose a node for evaluation that has a lower F cost.
ठीक है। तो अगर अब मेरे पास चॉइस है ए से बी पे जाने की, ए से सी पे जाने की और ए से डी पे जाने की, so you can see that if I'll choose a node with the lowest f cost, I'll always choose either C और D, क्योंकि दोनों सॉरी सी की कॉस्ट 10 है और डी की कॉस्ट 9 है, सो आई ऑलवेज चूज डी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो एफ एफ कॉस्ट जो है ऑफ सी इज 10 एंड एफ कॉस्ट ऑफ डी इज 9, एफ कॉस्ट ऑफ बी इज 12। सो अगर बी सी और डी में से मैंने नोड्स एवेल्युएट करने हैं तो आई फर्स्ट एवेल्युएट डी। सो यू कैन स्ट्रेट अवे सी के जैसे ही मैंने एफ को यूज किया है, my search has now become directed towards my goal. Remember, my goal is F. Okay? So if I choose the total cost F, then and there are certain conditions here, and we'll come to those conditions. Under what conditions this would always take you towards your goal. Okay? But if you have chosen your heuristic correctly, then the F cost, the evaluation based upon the total cost would always take you towards your goal, right? Acha. So using, if a cost uses, or if a search strategy uses the total cost, which is F cost, for deciding कि किस node को आपने evaluate करना है. If you use the total cost, which is the F cost, to find out कि किस node को आपने next evaluate करना है या कौन से path को आपने next evaluate करना है. So if any search strategy uses F total cost for evaluating different paths, then this search is called A star search strategy. A star is the search strategy that uses the total cost, F cost. Whereas जो पहले हमने blind search strategies में use किया था, blind search strategies के अंदर आप H को use नहीं करते, तो H is not there, right? If you only use G, and G is generally the traversal cost. आपके पास अभी तक जितने paths आपने evaluate किए हैं, the total the path cost is equal to the G cost. तो blind search में भी ऐसा है, और uniform search में भी ऐसा है, और depth first search में भी ऐसा है. If you add H to this cost and then search different paths, then it becomes A star. अच्छा, it might be possible कि आप अपनी जो search है उस search के अंदर यानी आपके पास टोटल f cost है, that as I told you, f of any node would be G plus H. आप अपनी path cost को consider ना करें, ठीक है? These are different scenarios. जब path cost को consider नहीं करेंगे तो f जो है that will be equal to your heuristic cost only. If you make your decision only on heuristic cost, then this becomes best first search. Okay. This becomes best first. Okay. So these are the different variations that you can have in your search strategies. ठीक है, तो आपके पास एक cost ऐसी है जिसके अंदर, so the total cost, अगर आप दोनों costs को consider कर रहे हैं in your search, F में आप G को consider कर रहे हैं और H को consider कर रहे हैं, then this would be A star. अगर आप सिर्फ G को consider कर रहे हैं, then this would be blind search strategies. अगर आप सिर्फ H को कंसिडर कर रहे हैं, then it becomes best first search. That means कि जो हमने previous example लिया था, तो अगर आप सिर्फ straight line distances को ही देख रहे हैं in order to evaluate कि next node आपने किसको करना है और इसमें path cost आप add नहीं कर रहे, then that would be the best first search. तो यहाँ पे अगर F is equal to H, then it becomes best first search. If F is equal to G, then it becomes blind search. If F is equal to G plus H, and then you decide कि किस नोड पे आपने जाना, then it becomes A star. ठीक है, और there are certain utilities, but
A star is always a complete search strategy, uh, because this would always take you to your goal, uh, and it would always be optimal under certain conditions. And one of the conditions, and obviously the condition associated with F would be the type of heuristic that you are choosing. Now, if your heuristic is good enough, okay, then these conditions will be applied जो कि मैंने आपको बताई है कि it would always be optimal, and it would always be complete, but under this condition कि आपकी heuristic जो है वो well defined heuristic हो, ठीक है नहीं? So therefore, these days, and even in the most of the applications जो कि path planning में applications आप use करते हैं, या गेम्स के अंदर जो आप मूव सिलेक्शन के लिए आप यूज करते हैं, यू यूज ए स्टार एल्गोरिदम विच इज क्वाइट कॉमन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे आपने अभी तक जितनी कॉस्ट आपने इनकर की है वो आप देखते हैं, प्लस आप उसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट देखते हैं. So let's take another example on this. Yes, A star is heuristic search, क्योंकि आपने उसके अंदर heuristic cost आप ऐड कर रहे हैं. F cost जो है that is G plus G cost which is the path cost plus the heuristic cost. तो A star is heuristic. अगर आप सिर्फ heuristic cost ही अगर आप ऐड कर लें, let's say कि F जहाँ जहाँ पे heuristic cost ऐड हो रही है आपकी F cost के अंदर, वो तमाम की तमाम heuristic search strategies होगी. So F is equal to H अगर आप सिर्फ ये ले रहे हैं, and यहाँ पे you are ignoring the G, or you are not taking G into consideration, आपकी total cost जो है वो heuristic cost के बराबर है. This would be best first search and it's a heuristic search strategy. Otherwise अगर आप F cost के अंदर आप H plus G दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, दिस वुड बी ए स्टार एंड दिस इज अगेन ह्यूरिस्टिक सर्च. ठीक है, तो दो ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रेटजीज हैं, बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड ए स्टार. ए स्टार के अंदर आप पाथ कॉस्ट भी ऐड करते हैं टोटल कॉस्ट निकालने के लिए. बेस्ट फर्स्ट सर्च के अंदर आप सिर्फ ह्यूरिस्टिक कॉस्ट यूज करते हैं. तो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर मैं बी नोड को एवेल्युएट करना चाहता हूँ, तो बी नोड को एवेल्युएट करने के लिए मैं बी का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लूंगा फ्रॉम द गोल, ठीक है, लेकिन इसकी पाथ कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा. तो पाथ कॉस्ट बी की जो है वो 1 है, एंड आई लेट्स से इग्नोर दैट. आई ओनली यूज द ह्यूरिस्टिक कॉस्ट. तो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट इसकी लेट्स से 12 थी, ठीक है. तो टोटल जो एफ कॉस्ट आएगी दैट वुड बी 12, क्योंकि जी को मैंने निगलेक्ट कर दी. लेकिन अगर मैं पाथ कॉस्ट भी ऐड करता हूँ, तो देन द कॉस्ट एट बी वुड बी 1 plus 12 which is 13. तो अगर मैं 13 कॉस्ट ले रहा हूँ, तो देन इट वुड बी ए स्टार, अदरवाइज इट वुड बी बेस्ट फर्स्ट सर्च. Best first search, and best first, by this name best first, because best first would be in terms of a best node would be considered the one that has a lower heuristic cost. ठीक है. मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक का मतलब ये है कि आपने ह्यूरिस्टिक ऐसा चूज किया है कि जैसे जो मैं गोल के करीब जाता जा रहा हूँ, ह्यूरिस्टिक कॉस्ट मेरी कम होती जा रही है. तो जैसे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हेयर इज अ ह्यूरिस्टिक, इज अ मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक. मिनिमाइजिंग ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि जो नोड ऑब्वियसली गोल के ज्यादा करीब होगा उसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कम होगा. ठीक है. तो अगर मैं के को एल के साथ कंपेयर करूं, तो के को एल के साथ कंपेयर करूं, तो के की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कम होगी कंपेयर टू एल. ठीक है. अच्छा, रिमेंबर यहाँ पे अजम्पशन ये है कि जो पाथ कॉस्ट जो है वो मैंने फिक्स की हुई है फ्रॉम नोड टू नोड. सो ए से बी तक पास कॉस्ट जो है वो 1 है, और ए से सी तक भी पाथ कॉस्ट जो है वो 1 है, एंड दैट्स जस्ट एन अजम्पशन. लेकिन इन प्रैक्टिकल टर्म्स आपकी ये जो जी कॉस्ट है दैट वुड आल्सो चेंज.
अच्छा, जी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? जी कॉस्ट वुड ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू योर स्टार्ट नोड। जी की जो वैल्यूएशन है दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू योर स्टार्ट नोड, और एफ एच की जो वैल्यूएशन है दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू योर गोल नोड। सो बी की जो पाथ कॉस्ट है दैट वुड ऑलवेज बी द कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड इन रीचिंग बी फ्रॉम ए, दिस वुड बी द जी फैक्टर। और एफ एच जो होगा दैट वुड ऑलवेज बी फ्रॉम बी टू एम। सो जो भी ह्यूरिस्टिक आप यूज कर रहे हैं उस ह्यूरिस्टिक की वैल्यूएशन कीपिंग योर गोल नोड इन माइंड, that is what your heuristic cost will be. And the cost keeping your start node in mind would always be your path cost. So you can very clearly see here कि A से जैसे ही आप A से दूर जाते जाएंगे आपकी G वैल्यू जो है ideally it should increase, क्योंकि आपकी path cost जो है वो increase होती जा रही है। So obviously A से E तक जाना जो है उसकी path cost ज़्यादा होगी compared to A से B तक जाना। And लेट्स से कि आपने नेविगेशन प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सो द एक्चुअल डिस्टेंस इज ऑन ग्राउंड between different let's say monuments on a map would be considered as your path cost, जो actual distances। so let's say कि अगर ये मेज के अंदर जो actual distances हैं between A and E, so A से B तक का जो actual distance होगा वो that would be, let's say this, I'll just draw this here। so A से आप move किया and you have actually reached B, so this is the actual distance। ठीक है, यहाँ से E तक का actual distance ये हो, ठीक है, यहाँ से F तक का actual distance ये हो, यहाँ से D तक का A से D तक का actual distance जो है वो ये, और A से C तक का actual distance ये। So these actual distances could be considered as G costs. G of C would be the actual distance from C to A. और किसी भी नोड के heuristic cost क्या होगी? Heuristic cost would be the heuristic evaluation of that node, और heuristic evaluation के लिए आप start node से compare नहीं करेंगे, बल्कि आप end node which is your goal node से आप compare करेंगे। So E का जो G cost है वो actual distance that connects that you have to traverse in order to reach E। So this would be, let's say इस path के ऊपर अगर आप move करते हैं तो that would be G, और यहाँ से straight line distance जो आप लेंगे that would be H। So this is G of E, ठीक है, so this is G of E and this would be H of E। इन दोनों को जब आप add करते हैं that becomes the F cost and the search becomes A star। There are other attributes also of A star and we'll see what those attributes are, but in simple terms this is what A star algorithm would evaluate। So A star में आप हमेशा G plus H evaluate कर रहे होते हैं, and if I, as I told you, if I ignore this G, then the only thing that I'll keep in mind in evaluating a node will be the heuristic cost, and therefore this is best for search। Okay, I hope this is clear। If there is any question on this? Ji, is there any question so far? G, Fike, go ahead। सर वैसे इसके बारे में नहीं था, एक पुरानी चीज का था, that's okay। जी सॉरी, मैं कह रहा हूँ एक पुरानी चीज का पूछना था, वो रह गई थी ब्रेथ बेस्ड सर्च में। अच्छा, so अच्छा, उसमें एक चीज, यस, पूछ सकते हैं। एक चीज जो बुक में लिखी हुई थी वो ये था कि the goal test is applied to each node when it is generated rather than when it is expanded। जी जी। और फिर उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, हम्म लेकिन वो चीज़ एग्जैक्टली समझ नहीं आई थी कि
generated instead of when it's expanded का क्या मतलब है, और ये कि worst case हमारा same क्यों नहीं रहता? अच्छा, वर्स्ट केस में आपके पास उसका नहीं। अच्छा, I'll just have a look at that and maybe I can explain you later. I'll just go through that part. If you can send me the exact reference for that, I'll just go through it and then maybe I'll explain it to you. ठीक है, मैं देखता हूँ. हाँ, मुझे बता दीजिए। अच्छा, let's take an example. So um, so heuristic functions is something that you'll have to figure out before applying the heuristic searches. So heuristic search जैसे age cost आपने कैसे निकालनी, that is something that you'll have to figure out before you apply this search strategy. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि in terms of let's say maps, आपने heuristic आपका जो हो सकता है वो straight line distance, Robo navigation. स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस हो सकते हैं between ये depth first search होगा. nodes. Okay, if you could. Okay, so right, so straight line distance आपके पास is one of the heuristics. So जैसे ही आपका जो let's say problem change होती है, आपका heuristic change हो सकता है. ठीक है. So let's see an example of best first search for robot navigation. So suppose you have your start node, or आपका start node is this is your start node, ठीक है, and this is your goal node, and you want to let's say reach this node, and और ये जो आपके पास shaded है area which is gray are the obstacles here, ठीक है. सो यहाँ पे लेट्स से कि आपने ह्यूरिस्टिक सर्च अप्लाई करनी है, एंड लेट्स अज्यूम इनिशियली कि आपने बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्लाई करनी है, और बेस्ट फर्स्ट सर्च एज आई टोल्ड यू इज द सर्च जिसमें एफ जो है दैट इज ओनली based upon the heuristic evaluation and G is not considered. The actual path cost is not considered. तो आपकी F cost जो है वो H के बराबर है. तो what could be the heuristic that you can apply in this scenario? G. So Ahmed Nikai, you have the straight both dimensions, that is the straight line. Okay, so जो अहमद बात कर रहे हैं वो ये है कि so here it will be an L shape. Okay, so जो if I've correctly understood, probably this is what you are referring to. Am I correct? Yes. Okay, so this is what you call as the Manhattan distance or the Manhattan function. ठीक है, जैसे माहिद ने बात की, तो एक ये हो सकता है. Is there any other possibility, any other heuristic that you can apply? Okay, as in the previous case, आप straight line distance भी ले सकते हैं. ठीक है, straight line distance का मतलब ये होगा कि you actually find out the x direction कितना आपने move करना है, y direction कितना आपने move करना है, and then you simply find out the hypotenuse by simply applying the Pythagoras theorem. तो आप ये भी कर सकते हैं. ठीक है, आप straight line distance भी ले सकते हैं. तो let's say कि आप अगर इस नोड पे हैं, तो यहाँ से आप मैनहट्टन फंक्शन अगर आप अप्लाई करते हैं तो दिस वुड बी द थिंग. तो इसमें यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स बिटवीन दिस नोड एंड योर गोल नोड, राइट. और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपके पास जो है वो ये आपको डिस्टेंस दे सकता है.
ओके, सो वेरी क्विकली अगर आप मैनहट्टन फंक्शन अप्लाई करते हैं, सो दीज आर दी मैनहट्टन एवेल्युएशंस, ठीक है। सो अगर आपकी एफ कॉस्ट एच के बराबर है तो दीज आर दी कॉस्ट्स एसोसिएटेड ऑफ ईच नोड। हर नोड की जो ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन है वो यहाँ पे ये स्लाइड आपको देगी। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप स्टार्ट नोड पे हैं और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप इधर मूव कर सकते हैं और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो दी ऑब्वियस चॉइस विल बी 6। आई मीन यू विल ऑलवेज गो फॉर दिस पर्टिकुलर नोड, क्योंकि इसकी जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है, एफ कॉस्ट है इस केस के अंदर, वो उसकी कम है। तो आप इस नोड पे मूव करेंगे और यहाँ से आप इधर मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। उसकी रीज़न ये है कि जो नेक्स्ट नोड है उसकी एफ कॉस्ट 7 है और दूसरी तरफ एफ कॉस्ट अभी भी 8 है। तो आप डायरेक्शन उस वक्त चेंज करेंगे जब आपकी किसी एक डायरेक्शन के अंदर एफ कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू दी अदर। सो लेट्स अज्यूम, आई मीन दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, कि फर्ज करेंगे यहाँ पे कॉस्ट 9 होती, तो फिर आप इस डायरेक्शन को छोड़ के आप इस नोड को एक्सपेंड करना शुरू कर देते और इस नोड इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते, क्योंकि अब आपकी एफ कॉस्ट जो है वो नीचे की तरफ कम आ रही है कंपेयर टू दी। ओके, सो here you will basically move in this direction, ठीक है। तो 6 के बाद 7 आपके पास कॉस्ट आ रही है, लेकिन ये कॉस्ट इंस्टेंटेनियसली थोड़ी सी इंक्रीज कर रही है, लेकिन this is still less than the other path which is under consideration. The other path under consideration gives you a heuristic cost or an F cost of 8, और इस पाथ के ऊपर यहाँ पे heuristic cost 7 है which is still less than 8, ठीक है। तो you will keep on expanding in this direction, ठीक, राइट। और यहाँ पे अगर आप इफ यू कीप ऑन एक्सपेंडिंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे आपके पास एफ कॉस्ट जो है वो बराबर आ जाती है। तो यहाँ पे एफ कॉस्ट इसकी है 8 है और यहाँ पे आपके पास एफ कॉस्ट जो है वो भी 8 है, ठीक है। सो नाउ बोथ पाथ्स गिव यू द सेम एफ कॉस्ट। तो अगर सेम एफ कॉस्ट आ रही है तो देन प्राइमरीली यू कैन आई मीन रैंडमली सेलेक्ट बिटवीन दीज टू पाथ्स। तो या आप इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करें या आप इस डायरेक्शन में आप कंटिन्यू करना शुरू कर दें। यू कैन स्टार्ट एक्सपेंडिंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस्ट एफ कॉस्ट 8 है और यहाँ पे भी एफ कॉस्ट 8 है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एफ कॉस्ट 7 होती तो यू वुड हैव डेफिनेटली गॉन इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर एफ कॉस्ट आपकी 8 है। या अगर यहाँ पे एफ कॉस्ट 9 होती तो फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्शन स्विच कर सकते थे। तो आप इस पाथ को छोड़ के दोबारा यानी इस पाथ को एवेल्युएट करना शुरू कर देते, ठीक है। सो let's I'll just very quickly go over this, that how this search would be. So this is not a star because इसमें आपने actual path cost इसमें आपने incur नहीं की, and I'll just finish that here. So this is how this search will continue. तो आप इस लाइन के ऊपर क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो पाथ कॉस्ट आपके पास आ रही है दैट इज ऑलवेज लेस देन 8, which is present on this path, ठीक है। तो यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे अगर आपने फर्ज करें इस पाथ को चूज करते हैं तो along this path throughout कॉस्ट जो है वो 8 से कम है, ठीक है। Okay, so we'll continue with this next time. Now you have a quiz, so you can go ahead and start your quiz. Thank you.